بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the new lecture of class 5th English. Students, take out page number 15. Paragraph 2nd. Let's start reading of the second paragraph. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was appointed by Almighty Allah to show the Arabs the right path. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam disliked their cruel ways. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam worked hard to reform them. He sallallahu alaihi wasallam changed their habits and manners by his own example. He sallallahu alaihi wasallam taught them to speak the truth, show mercy to the poor and the sufferers, to respect women and to be kind to the slaves. He sallallahu alaihi wasallam was called Sadiq and Amin even by his enemies because of his honesty and straightforwardness. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam led a simple life, which is the best example for all the people of the world. He sallallahu alaihi wasallam would wear clean clothes. These clothes were usually common and inexpensive. Which depicts the simplicity of our beloved Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He sallallahu alaihi wasallam was the leader of Muslims and had all the power, but he did not avail any benefit from this power. He sallallahu alaihi wasallam possessed tolerance. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to worship Almighty Allah in the cave of Hira. At the age of 40, he received the first revelation of the Holy Quran in the cave of Hira. That was about the importance of knowledge, which is given below. Recite in the name of your Lord who created. He created the human being from a clot. Recite, and your Lord is the most generous, who taught to write with the pen, taught the human being what he knew not. Holy Quran, Surah Al-Alaq. The famous event known as the Hijrah, migration to Medina, occurred in 622 AD, about 12 years after the revelation of the first verses of the Holy Quran. This journey was destined to have far-reaching effect on establishing the Islamic community, strengthening the position of Islam and spreading its message. Students, there are some difficult words. Try to learn their meaning. For example, appointed. Appointed mean mabous karna. Dislike mean napasand karna. Cruel ways.
zalimana riwaj, cruel ways. Reform means islah. Mercy mean raham. Slave mean ghulam. Enemy means dushman. Honesty mean imandari. Straightforwardness mean rastgo ya sacha. Inexpensive means kam kharch ya sasta. Defects mean zahir karna. Simplicity means sadagi. Possessed mean qabza karna. Tolerance mean bardasht. Worship means ibadat karna. Khair means ghar. Revelation means wahi. Knowledge means ilm. Generous means fayaz. Migration means hijrat. Occurred means waqia hona. Distant means पहले से मुकर्रर होना. Establishing means कायम करना. Community means रियासत. Lord means Parwardigar. Generous means Fayaz. Migration means Hijrat. Occurred means वाक़या होना. Distant means पहले से मुकर्रर होना. Establishing means कायम करना. Community means रियासत. Strengthening means mustahkam karna, and spreading means phailana, and the last one message means paygam. So students, let's start the translation of this paragraph. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was appointed by Almighty Allah. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मबूस किया. किस लिए मबूस किया? To show the Arab the right path, कि अरब के लोगों को सीधा रास्ता दिखाए. To show the right path, सीधा रास्ता दिखाए. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम disliked their cruel ways. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम disliked their cruel ways. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके जालिमाना रिवाज नापसंद थे. The Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam worked hard to reform them. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam worked hard to reform them. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ने उनकी इस्लाह के लिए शदीद मेहनत की. Worked hard, शदीद मेहनत. उनकी इस्लाह के लिए शदीद मेहनत की. He changed their habits and manners by his own example. उन्होंने अपनी मिसालों के ज़रिए उनकी आदात, उनकी हैबिट्स, उनकी आदात और मैनर्स, तौर तरीक़े बदल दिए. मैनर्स तौर तरीक़े, हैबिट्स मीन आदात. उनके तौर तरीक़े और उनके आदात को बदल दिए. किस? उनके अपने चेंज ऑन एग्जाम्पल, अपने एग्जाम्पल के ज़रिए उन्होंने उनके आदात और उनके तौर तरीक़े बदल दिए. He taught them
to speak the truth, show mercy to the poor and the sufferers, to respect women and to be kind to slaves. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सच बोलना, गरीबों और मुसीबत ज़दा लोगों पर रहम करना, औरतों की इज्जत करना और ग़ुलामों से रहमदिली का सलूक करना सिखाया. काइंड टू स्लेव्स, ग़ुलामों के साथ रहमदिली का सलूक. He sallallahu alaihi wasallam was called Sadiq and Amin even by his enemies because of his honesty and straightforwardness. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके दुश्मनों ने भी आपकी ईमानदारी और रास्तगोई की वजह से सादिक और अमीन के नाम से पुकारा. सादिक और अमीन के नाम. सादिक मीन रास्तगो, सच्चा, और अमीन मीन अमानतदार. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam led a simple life which is the best example for all the people of the world. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ने एक सादा ज़िंदगी गुजारी जो कि दुनिया भर के लोगों के लिए बेहतरीन मिसाल है. All the people of the world, दुनिया भर के लोगों के लिए एक बेहतरीन मिसाल है. He sallallahu alaihi wasallam would wear clean clothes, साफ कपड़े पहनते थे, साफ सुथरा लिबास पहनते थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. These clothes were usually common and inexpensive. वो जो कपड़े थे वो आम कपड़े होते थे और inexpensive और कम खर्च वाले होते थे. ज़्यादा खर्च वाले नहीं होते थे, एक्सपेंसिव नहीं होते थे, inexpensive होते थे, कम खर्च, सस्ते होते थे. Which depicts the simplicity of our beloved Muhammad sallallahu alaihi wasallam, जो कि जाहिर करता है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी को, simplicity. He was the leader of Muslim and had all the power, but he sallallahu alaihi wasallam did not avail any benefits from his power. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के सरदार थे और तमाम इख्तियारात रखते थे. He had all the power, तमाम इख्तियारात रखते थे, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन इख्तियारात से कभी भी फ़ायदा नहीं उठाया. He did not avail any benefits from this power. उन्होंने अपने इख्तियारात से कभी भी फ़ायदा नहीं उठाया, नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया, हालांकि उसके साथ तमाम इख्तियारात और पावर थी. He सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम possessed tolerance, वो क़ुव्वत बर्दाश्त रखते थे, क़ुव्वत बर्दाश्त के मालिक थे. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम used to worship Almighty Allah in the cave of Hira. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में अल्लाह ताला की इबादत करते थे. Worshipped Almighty Allah, अल्लाह की इबादत करते थे. कहाँ पर? In the cave of Hira, गारे हिरा में. At the age of 40 साल की उम्र में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम received the first revelation of the Holy Quran in the cave of Hira. 40 साल की उम्र में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गारे हिरा में कुरान पाक की पहली वही नाजिल हुई. फर्स्ट रिविलेशन ऑफ द होली कुरान, कुरान पाक की पहली वही नाजिल हुई. किस एज में? कि जब वो 40 साल के थे. At the age of 40. That was about the importance of knowledge which is given below. ये वही इल्म की अहमियत के बारे में थी जो कि दर्ज झेल है. Recite in the name of your Lord who created. अपने परवरदिगार के नाम से पढ़े जिसने पैदा किया. Who created, जिसने पैदा किया. He created the human being from a clot. उसने इंसान को खून के लोथले से पैदा किया. लोथले, क्लॉट नहीं, लोथला, खून के लोथले. He created the human being from a clot. उसने इंसान को खून के लोथले से पैदा किया. Recite, पढ़े. And your Lord is the most generous. पढ़े, recite, पढ़े. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब बहुत ही फयाज है. आपका रब बहुत ही फयाज है, generous, फयाज. Who taught to write with the pen. जिसने कलम के जरिए लिखना सिखाया. Taught the human being what he knew not.
इंसान को वो सिखाया what he knew not, जो वो नहीं जानता था। ये सूरह अलक की आयत थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल खलक़, वो सूरत है, ये कुछ उनकी आयत थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। The famous event known as the Hijra, migration to Medina, हिजर का मशहूर वाक़या, the famous event known as the Hijra, हिजरत का मशहूर वाक़या occurred in 622 AD, 622 ईस्वी में पेश आया, about 12 years after the revelation of the first verses of the Holy Quran। और ये वाक़या कुरान पाक की पहली वही के तकरीबन 12 साल बाद पेश आया। This journey was destined to have far-reaching effect on establishing the Islamic community, strengthening the position of Islam and spreading this। इस सफ़र में इस्लामी रियासत के क़याम, इस्लाम को मुस्तहकम करने और इस्लाम के पैगाम को पहुँचाना, इस्लाम के पैगाम को फैलाना, इस पर दूररस असरात मुरतब हुए। So students, it's enough for today. As I'm giving you some homework. So homework for you is find out 10 difficult words and write down their meanings and rough notebook. Inshallah, see you in the next class with the new lecture. Thank you. Allah Hafiz. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.